Hello everyone. Hello. As promised, I am here with you all of you guys. And हमने प्रॉमिस किया था कि वेडनेसडे को और संडे या सैटरडे को एक दिन आई विल बी हियर विथ यू गाइस एंड आई एम हियर. सो आई जस्ट वांट टू से कि जो नेक्स्ट फेज है अब, ठीक है, मिड स्कूल का. नाउ अभी हमारे एग्जाम्स चल ही रहे हैं. वी आर गिविंग द एग्जाम्स फॉर फोर्थ ईयर. एक प्रैक्टिकल हो चुका, एक प्रैक्टिकल और अभी होना बाकी है. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा ये हे गाइस, अभी कोई लाइव अटेंड नहीं कर रहा है. ठीक है. हाय हाय हाय, somebody is here. So next phase of life start हो गया है. Tell me if the video is lagging. Okay, somebody is watching. So next phase of life start होने वाला है, क्योंकि अभी हमारा जो फिफ्थ ईयर है वो स्टार्ट हुआ है एंड फोर्थ ईयर के एग्जाम्स अभी चल रहे हैं हमारे. अभी हमारा एक प्रैक्टिकल और बचा है. मेरा तो एक प्रैक्टिकल और बचा है और बाकी कुछ लोगों के प्रैक्टिकल्स ख़त्म हो चुके हैं. कुछ बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनके अभी बाकी हैं. तो अब वी आर इन फाइनल ईयर्स नाउ एंड मेड स्कूल का ये आखिरी साल है. सो अगस्त में वी विल बी एंडिंग द फाइनल ईयर. मोस्ट प्रोबेबली अगर सारी चीज़ें सही रहती हैं तो. एंड उसके बाद हमारा इंटर्नशिप यहाँ स्टार्ट होगा मॉरिशस में. I don't know if it's going to be a paid or non-paid. I think most likely it's not going to be a paid one. But इंटर्नशिप स्टार्ट होगा. इंटर्नशिप स्टार्ट होने के बाद फिर हम लोग को शायद यहाँ एग्ज़ाम देना पड़े. इट्स नॉट सो श्योर कि अभी एग्ज़ाम देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा यहाँ पे. एंड देन विल गो बैक टू इंडिया. सो आई डोंट नो, इट्स मतलब थोड़ा अच्छा लगता है देखने में. जस्ट लेट मी शेयर दिस विथ अदर पीपल एज वेल. ओके. बाय द वे, जो अभी लाइव अटेंड कर रहा है, कैन समबडी राइट दैट इन कमेंट सेक्शन की हु इज द पर्सन, वेयर इज ही फ्रॉम, इफ यू आर कंफर्टेबल. इट्स ग्रेट टू सी कि आई हैव स्टार्टेड दिस लाइव क्वाइट लेट टुडे एंड well, hmm. सो काफ़ी अच्छा लग रहा है यार देख के कि नेक्स्ट फेज लाइफ का स्टार्ट हो रहा है. और लंबी खासी अच्छी खासी जर्नी रही है. um, मैं बहुत नर्वस हो जाती हूँ यार लाइफ के टाइम पे. सो मुझे समझ नहीं आता, बट जो भी अभी लाइव अटेंड कर रहा है, वेलकम गाइस. एंड आई एम मानसी मदेशिया. आई एम अ मेडिकल स्टूडेंट इन मॉरिशस एंड एज प्रॉमिस्ड आई एम हियर इन लाइव विथ ऑल ऑफ यू गाइस. मैंने बोला था कि मैं वेडनेसडे को आऊँगी. मैं सैटरडे या संडे में से एक दिन आऊँगी. मोस्ट प्रॉब्ली आई कम ऑन सैटरडे या संडे. सो आई एम हियर एंड जैसे कि मैंने बोला कि वी आर नाउ इन द फिफ्थ ईयर एंड अब एक नेक्स्ट फेज स्टार्ट हो रहा है. तो वो कहीं ना कहीं हम लोग को रियलाइज भी हो रहा है कि किस तरीके से लाइफ इज गोइंग टू चेंज. हमें ऐसा लग रहा है कि एक पैर हमारा अभी बाहर ही है, एक पैर हमारा अभी इंडिया में पड़ रहा है, एक पैर हमारा अभी यहाँ पर है. तो वो चीज़ काफ़ी लग रही है इंटरेस्टिंग अभी देखने में हमको, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है. अगस्त में हम लोग यहाँ से फाइनली निकलेंगे. तो एनीवेज, जो भी लाइव अटेंड कर रहा है यार, कमेंट्स में एटलीस्ट हाय तो लिखो. लेट मी नो हु इज हियर, बिकॉज काफी लेट में लाइव स्टार्ट हुआ है एंड इस टाइम अगर कोई आया है तो काफी अच्छा लगता है देख के. सो इफ समबडी कैन राइट इन द लाइव सेक्शन हाय, या आई कैन नो कि हु इज अटेंडिंग, तो मुझे काफी अच्छा लगेगा.
because it's a window that opens between me and you, where we both sit together to talk and see who is on the other side actually. बहुत अच्छा लगता है देख के। मतलब आज मैं बहुत सारी चीज़ें बताने जा रही हूँ। मैंने ये बहुत अनप्लान्ड लाइफ था, क्योंकि एग्ज़ाम अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी चल ही रहा है। बट क्योंकि मैंने सोचा था कि आई स्टार्टेड टेकिंग यूट्यूब वेरी, वेरी सीरियसली एंड आई एम ट्राइंग टू बी वेरी, वेरी कंसिस्टेंट। हाय, हाय राहुल, कैसे हो तुम? हाय, ग्रेट टू सी यू हियर। एंड अभी वही है कि अभी समझ नहीं आ रहा है, तो आपको अगर कुछ भी पूछना है मेरे से एज़ अ फाइनल ईयर मेडिकल स्टूडेंट, तो यू कैन आस्क दैट टू मी, एंड इट वुड बी ग्रेट as a final year medical student if you want to ask anything from me. So, guys, I don't know if video is lagging a bit, but please bear with it. ठीक है, थोड़ा सा वीडियो लैग कर रहा है, थोड़ा मैं चैट पे लिख भी देती हूँ। सो काफ़ी लोग आ चुके हैं अभी लाइव वीडियो पे, अभी 4 लोग अटेंड कर रहे हैं। सो किसी को मेरे से कुछ भी पूछना है एज़ अ फाइनल ईयर मेडिकल स्टूडेंट इन मॉरिशस, तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखो। आई एम रीडिंग ऑल द कमेंट्स व्हाटएवर इज़ कमिंग हियर। सो एनीवन? ओके, सो वही है। अब मेरी जो जर्नी है, ठीक है, अगर बात करें, मैं ये सोचती हूँ कि यार इसमें इट मोर इंटरेस्टिंग फॉर यू गाइज। um anyway, we'll see that later. Hi, hi, Hari Om. I think I've seen you first time in my life, Hari Om. कुछ पूछना है मेरे से as a final year medical student, तो you can ask. um मैं तुम लोगों को अपनी एक वो बताती हूँ। काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है मेरा जो जर्नी रहा है। अभी यहाँ पे 5 साल मेरे को हो चुके, एंड अब तो इंडिया जाना है। एक ऐसा लग रहा है कि मतलब एक पैर हमारा भी इंडिया में ही है। तो कुछ पूछना नहीं है किसी को मेरे से, कुछ भी पूछना है। अपने बारे में कुछ बताओ आप लोग, कि कहाँ से हो आप लोग, कहाँ से देख रहे हो, एंड हाउ डिड यू गॉट टू सी माय चैनल, कहाँ से मिला? How about MBBS in from Mauritius and staying there after that? Well, okay. How about staying in Mauritius after that? यार मैं क्या बताऊँ इसके लिए? यहाँ पे तरीके हैं, तुम रह सकते हो। लाइसेंस तो अब नॉन सिटीजन्स को ये लोग दे रहे हैं, ठीक है? तो हम लोग रह सकते हैं यहाँ पे, काम कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कैन वी सेटल इन मॉरिशस आफ्टर एमबीबीएस? देखो, पहले नॉन सिटीजन्स को ये लोग नहीं देते थे लाइसेंस, पर अब ये लोग नॉन सिटीजन्स को लाइसेंस दे रहे हैं, तो आप ले सकते हो। यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं, वो अच्छा पे करते हैं, तो वहाँ पे काम कर सकते हो। अच्छा, आप हरियाणा से हैं? ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट टू सी दैट। हरियाणा से तो आई नो समबडी हु इज अ वेरी बिग यूट्यूबर, इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, सचिन जांगड़ा को अगर आप जानते होंगे, तो ही इज ऑल्सो फ्रॉम हरियाणा ओनली। सो या, आई डोंट नो, वीडियो काफी ज्यादा लैग कर रही है यार, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इसमें। अच्छा, आप बिहार से हैं? ग्रेट। आई नो अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स आर फ्रॉम बिहार।
किसी को पता है, किसी ने कभी स्ट्रीमिंग स्टार्ट की है? किसी को पता है कि ये वीडियो लैग करती है तो उसको कैसे फिक्स किया जाता है? अच्छा, मेरे जर्नी के बारे में क्या पूछना है? किसी को पूछना है कुछ? एनीबॉडी वांट्स टू आस्क? अराउंड सैलरी एंड लाइफस्टाइल आफ्टर एमबीबीएस इन कंपैरिजन टू इंडिया। देखो, प्राइवेट हॉस्पिटल्स यहाँ पे अच्छा पे करते हैं। तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स तो अगर तुम्हें मिल जाए तो तुम डेफिनेटली यू कैन डू यू मेक मनी, बिकॉज लॉट ऑफ डॉक्टर्स आई सी दे कम फ्रॉम इंडिया एंड स्टार्ट वर्किंग हियर। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आई डोंट नो कि वो देंगे कि नहीं देंगे, या हमको वहाँ पे मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। आई डेंट सी एनी इंडियन बाय फार वर्किंग हियर इन एनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो वही है। तो दे ऑल्सो पे यू गुड। तो यही है। स्टडी के बारे में बताइए। ओके, स्टडी के बारे में मैं क्या बताऊँ आपको कि यहाँ पे पढ़ाई-वढ़ाई तो काफ़ी ठीक-ठाक है, ठीक है? अम, मतलब मुझे पढ़ाई में सच कोई प्रॉब्लम नहीं लगा। टीचर्स भी अच्छे हैं, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी अच्छा है, करिकुलम भी अच्छा है, इंडिया के जैसा है, तो ये मैं हमेशा बताती आ रही हूँ। तो आई वांट टू टॉक समथिंग डिफरेंट कि मतलब मेरा जर्नी कितना चैलेंजिंग था, इसके बारे में अगर कुछ पूछना चाहते हो कि मतलब कैसा रहा 5 साल, 4 साल यहाँ पे, तो उसके बारे में कुछ पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हो। मतलब इसके बारे में तो मैंने बहुत बताया है यार कि पढ़ाई कैसी थी। ठीक है, यहाँ पे ठीक-ठाक है, पढ़ाई एजुकेशन काफ़ी अच्छा है। दैट इज़ वेरी गुड हियर। मैं तुम्हें यहाँ का कॉलेज दिखाती हूँ। मैं आपको जनवरी से जानता हूँ। अच्छा, थैंक यू फॉर रिस्पोंडिंग, योर वीडियोज़ आर गुड। ओके, दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट। आई विल शो यू सैज। आई विल शो यू हॉस्पिटल इन मॉरिशस। मॉरिशस, वेट। मैं यहाँ पे आपको मॉरिशस के हॉस्पिटल्स दिखाती हूँ, ठीक है? ये है सैज का हॉस्पिटल जो है। यही है सैज का हॉस्पिटल बेसिकली, ये जो दिख रहा है। ओके, यही है सच का हॉस्पिटल। इसमें ऐसा सच कोई फ़ोटो नहीं दिख रही है, सब रील्स ही हैं। आई डोंट नो क्यों यहाँ पे, क्योंकि बहुत छोटी जगह है ना, तो ज़्यादा मतलब बहुत बड़ा देश नहीं है, तो इतने ज़्यादा व्लॉगर्स या यूट्यूबर्स यहाँ पे क्रिएटर्स नहीं हैं, तो यही है। ऑल में देखते हैं कि अगर कोई फ़ोटो मिल जाए तो। कितना स्ट्रेंज है ना कि यहाँ पे कोई फ़ोटो ही नहीं है सच की। क्लिनिकल पोस्टिंग्स वगैरह काफ़ी अच्छी हैं यार, काफ़ी अच्छी है क्लिनिकल पोस्टिंग्स। मतलब सारे डिपार्टमेंट्स में तो मैं नहीं कहूँगी, पर पीडियाट्रिक्स बहुत अच्छा है। ऑर्थो उतना अच्छा नहीं है, ठीक है? ऑर्थो में इतने ज़्यादा क्लिनिकल एक्सपोज़र तुमको नहीं मिलेगा। अ, लेकिन ठीक-ठाक है। ओबीजी भी, मेडिसिन काफ़ी अच्छा है, पीडियाट्रिक्स काफ़ी अच्छा है। और अब तो इन लोगों ने थोड़ा-सा फ़ॉर्मेट चेंज किया है। सी ये जो दिख रहा है ना तुम्हें, ये फ़ोटो मैं दिखाती हूँ।
लैगिंग है, हाँ, लैगिंग है, काफ़ी लैगिंग है। यही है एक्चुअली। मैं अपने उसमें दिखाऊँगी ना तुम्हें यूट्यूब पे, तो तुम्हें समझ में आएगा कि क्या है। ठीक है। मेरे शॉर्ट वीडियोज़ में जाके तुम देखोगे ना तो तुम्हें पता चल जाएगा। इज़ रेसिज़्म देयर फॉर इंडियंस एंड इज़ द लैंग्वेज बैरियर फॉर इंडियन और नॉट? यार तुम लोगों में से अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया ना चैनल को तो सब्सक्राइब कर लो प्लीज़ यार। दैट हेल्प्स अस अ लॉट एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली है। मैंने बहुत सारी चीज़ें सोच के रखी हुई हैं। मेरे शॉर्ट्स में जाके चेक करोगे ना तुम। गिव मी 1 सेकंड, गिव मी 1 सेकंड। पता नहीं यार यहाँ पे क्या सीन है इतना। मेरे शॉर्ट्स वीडियो में जाके चेक करोगे ना तो तुम्हें बहुत सारी वीडियोज़ मिलेंगी जिसमें सैज के बारे में बताया गया है, यहाँ के हॉस्पिटल के बारे में काफ़ी बड़ा है, ठीक है? एंड मैंने अभी काफ़ी सारे पॉडकास्ट वगैरह किए थे, तो एक आध अभी बहुत सारे और करने हैं पर टाइम नहीं मिल रहा है यार इतना। दिखा रही हूँ, ये हमारे कॉलेज का यूनिफ़ॉर्म है, ठीक है? थोड़ा-सा लैग कर रही है, 1 सेकंड रुको। ठीक है? 1 सेकंड। ठीक है, ये हमारे कॉलेज का मैं दिखाती हूँ तुम्हें। अ, ये सुपर यू है यहाँ का, ये फ्लाइट है एयर मॉरिशस, ठीक है? और ये यहाँ पे दिख रहा है मॉरिशस के लोगों का जो फेस्टिवल है इसके बारे में मैंने डाला था। वीज़ा फ्री है मॉरिशस स्टूडेंट्स के लिए इसके बारे में डाला था, ठीक है? हॉस्पिटल के बारे में भी डाला था। हॉस्पिटल के बारे में कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? हॉस्पिटल के बारे में भी डाला था। अगर किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया गाइस तो अभी चैनल सब्सक्राइब कर लो प्लीज़, प्लीज़। ये है सैज मॉरिशस, ठीक है? ये हमारा हॉस्पिटल है, ठीक है? ये है सैज का पूरा हॉस्पिटल। तो ये देख सकते हो तुम कि किस टाइप का हॉस्पिटल है, काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है एक्चुअली। जितना बड़ा मॉरिशस का हॉस्पिटल है ना, उतना बड़ा तो मतलब इतने जगह में तो इंडिया में कितना और चीज़ बन जाएगा। इनका पार्किंग लॉट ही इतना बड़ा है ना कि उसमें मतलब बहुत ज़्यादा जगह है, उसमें तो बहुत सारी और चीज़ें हमारे यहाँ पे हो जाएंगी। पर ज़मीन है इनके पास, आखिर इतने लोग नहीं रहते हैं तो काफ़ी सही है। सो यही है सैज का हॉस्पिटल, ठीक है? मैं कभी इसकी फ़ोटो डालूँगी क्योंकि अभी हम लोग कल भी जाएँगे, परसों भी जाएँगे, तो जाएँगे ही काफ़ी लाइक अब तो सिर्फ 5th ईयर का ही पोस्टिंग बचा है तो शायद हम लोग को यहाँ पे प्रैक्टिस भी करना पड़े। जो हम लोग यहाँ पे इंटर्नशिप करेंगे तो वो भी रहेगी। तो वही है, अभी इसमें क्यों शिफ्ट नहीं हुआ? मैंने कर तो दिया। काफ़ी ज़्यादा लैग पे चल रही है वीडियो, काफ़ी ज़्यादा लैग पे चल रही है। तो काफ़ी ज़्यादा लैग हो रही है वीडियो। ठीक है? एंड बाकी तो मैं अच्छा मुझे एक वो चाहिए था, मुझे एक चीज़ पूछनी थी कि शुड आई मेक एजुकेशनल कंटेंट ऑन दिस अबाउट मेडिसिन और नॉट? प्लीज़ टेल मी, टेल मी गाइस, व्हाट वुड यू लाइक टू से?
यार मेरे को एक बात बताओ कि मैंने एक पोस्ट बनाया था, ठीक है, मैंने तुम्हें लिंक शेयर किया है उसका चैट में, जरा चैट चेक करो एक बार। ये पोस्ट बनाया था मैंने, एक बार बताओ कि ये पोस्ट अच्छा लगा कि नहीं लगा तुम लोगों को, कि मतलब मुझे ऐसे पोस्ट बनाने चाहिए। ये GERD पे है, मेडिकल कंडीशन पे है, ठीक है, गर्ड पे, जो बेसिकली, तो इस तरह से मैंने एक एजुकेशनल कंटेंट बनाया था एनिमेटेड फॉर्म में, ताकि तुम्हें थोड़ा सा समझ में भी आए, छोटी छोटी मेडिकल कॉन्सेप्ट में काफ़ी मज़ा आए। तो मुझे बताना कि तुम्हें अच्छा लगा कि नहीं लगा, ठीक है। और चैनल सब्सक्राइब कर लो गाइस, अगर सब्सक्राइब अभी भी नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो गाइस, क्योंकि मतलब बहुत सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग आने वाली है, और मैं अकेले सब कुछ करके क्या करूँगी यार, जब मज़ा ही नहीं आएगा, कोई साथ में होगा ही नहीं। तो इसीलिए लेट्स जस्ट बी नोटिफाइड। मैं अकेले कितना बार नोटिफिकेशन मतलब किसको किसको जाके दूंगी। सो इफ़ यू आर हैव सब्सक्राइब्ड इट, इफ़ यू हैव प्रेस द बेल, देन यू गेट नोटिफाइड फॉर एवरीथिंग। सो ये बताना कि कैसा लगा ये जो मैंने पोस्ट बनाया था, एंड मुझे ऐसी बनानी चाहिए कि नहीं। इसका लिंक मैंने ऑलरेडी, द लिंक इज नाइन, कीप मेकिंग, ओके, ग्रेट। You guys like educational bites of medicine? Yes, great. So now चलो let's see next. सी अभी मॉरिशस के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन है नहीं वैसे, ठीक है, एज इन मतलब कोई प्रॉपर यूट्यूबर है मॉरिशस में जो प्रॉपर, लोग मोस्टली इमोशनल कंटेंट बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सो मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं इस पे पहले ही, जिसमें जैसे कि ये है, मतलब बहुत सारे लोग मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे थे कि क्या यहाँ पे बहुत सारे जैसे नहीं होते FAQs पूछते हैं मोस्टली अबाउट मॉरिशस, तो वो सारी चीज़ मैंने कवर की थी। फिर एक पॉडकास्ट बनाया था, एक और पॉडकास्ट बनाया था यहाँ पे, लाइक FMG जो लोग पास किए थे उनके साथ। तो ये सारी चीज़ें मोस्टली ऐसे ही कंटेंट कवर किया है, लेकिन एक स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट में भी काफ़ी चीज़ें कवर की हैं, ठीक है। और मैंने यहाँ पे एक शादी अटेंड की थी, ये तो वीडियो 1K क्रॉस हो चुका फीस स्ट्रक्चर पे जो बनाया था, एंड एक शादी भी अटेंड की थी मॉरिशस में। तो यू विल नॉट बिलीव कि यार यहाँ पे ऐसी भी जगहें हैं जो लाइक लिटरली तुम्हें लगेगा इंडिया जैसी है, तो वो भी कवर किया। तो तुम चाहते हो मैं व्लॉग्स बनाऊँ या ना बनाऊँ, वो मेरे को बताओ यार। एंड ये सब तो स्टार्टिंग की वीडियोज़ है, इनमें तो मैं पता नहीं क्या बोल रही थी, मुझे नहीं पता। तो वो सारी चीज़ें, तो वो सब जाके जाके देखो यार वीडियोस को। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो प्लीज़। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना यार, इतनी मेहनत लगती है। मैं पता है मैं कल सोई नहीं हूँ, लेकिन फिर मैं आज यहाँ पर इसलिए आई हूँ क्योंकि ठीक है कंसिस्टेंसी चाहिए ना। when you come to YouTube, when you do anything, you have to be consistent no matter what. तो मेरा कमरा एकदम बहुत ही ज़्यादा messed up हालत में है, but still I am sitting here because that was a commitment to come. So you know, इसलिए तो प्लीज़ अप्रिशिएट दैट थिंग। इफ़ यू आर कमिंग फर्स्ट टाइम ऑन द चैनल, डू सब्सक्राइब टू इट। इसके अलावा व्हाट डू यू गाइस वांट मी टू कम अप मोर विद? करिकुलम कैसा है? करिकुलम करिकुलम काफ़ी अच्छा है, इंडियन इंडियन टाइप का है पूरा, ठीक है, इंडियन जैसा है, इंडियन जैसा है पूरा, ओके। सो या आज इतना मज़ा नहीं आ रहा है लाइव चैट में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वीडियो लैग कर रही है, बहुत ज़्यादा लैग कर रही है। एंड यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है, मैं प्राइम मिनिस्टर का दिखाती हूँ। He is also from India, like he is the Prime Minister of Mauritius, and he is also from India. Naveen Ramgoolam. नहीं अभी कौन है? Right now who is the Prime Minister? Okay, Dr. Naveen Ramgoolam. ठीक है. So
एंड मॉरिशस एज अ कंट्री मैं दिखाती हूँ कि कैसी है। लाइक ये है मॉरिशस, बेसिकली इट्स आइलैंड नेशन, ठीक है। तो ये तुमको दिख रहा है कि मतलब इस टाइप की यहाँ पे एक अंडर वाटर वाटरफॉल है। तो ये तुम्हें दिख रहा होगा इस टाइप का, ये अंडर वाटर वाटरफॉल है मॉरिशस का। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि लाइक ऐसा इसका ट्रेंच है एक टाइप का, लाइक समुंदर में ही जो उसका बेड होता है उसमें ही एक टाइप की एक कह सकते हैं खाई टाइप की है। तो उसमें पानी और सैंड जाता है अंदर, तो ऐसा लगता है कि कोई वाटरफॉल है। तो ये यहाँ का बहुत ही फेमस अंडर वाटर वाटरफॉल है, इसको अंडर वाटर वाटरफॉल कहते हैं, ठीक है। ये दिख रहा है तुम्हें, ये होता है, ठीक है। ये यहाँ का बहुत फेमस है, इसको देखने के लिए लोग हेलीकॉप्टर से आते हैं, 10,000 मॉरिशस यानी 20,000 INR लेके जाते हैं। तो ये एक जगह है, काफी फेमस है, बहुत फेमस है यहाँ की। और एक और चीज मैं तुम्हें दिखाती हूँ, ठीक है। एक दिन मैं एक वीडियो लाइव बनाऊंगी टूर ऑफ मॉरिशस करके, तो मैं पर्टिकुलरली वो सारी चीजें कवर करूंगी इसमें, मॉरिशस के टूर में, ठीक है। और मॉरिशस में तुम्हारे डेस्टिनेशंस क्या हैं? हाँ, ये देखो, जैसे कि तुम बीचेस देख सकते हो मॉरिशस में, लोकेशंस देखते हैं, ठीक है। तो मॉरिशस में क्या क्या लोकेशंस हैं तुम इमेज में देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो, पोर्ट लुइस, पोर्ट लुइस कैसी जगह है, ठीक है। पोर्ट लुइस में ये बहुत फेमस जगह है जहाँ पे मैं गई थी। मतलब बेसिकली यहाँ पे से अम्ब्रेला जैसे बने हुए हैं, ठीक है। और ये यहाँ पे जो पोर्ट लुइस यहाँ का कैपिटल है उसके लिए है, वहाँ पे होता है, ठीक। और उसमें एक तुम्हारा ये कौन सी जगह है, ये तुम्हारा वाटर फ्रंट है। ये यहाँ पे हम लोग गए हैं, ये वाटर फ्रंट है। यहाँ पे आगे लाइक पोर्ट है ना, बेसिकली जो पोर्ट होता है, तो शिप्स वगैरह वहाँ पे आती हैं, डॉक होता है उनका। एंड उसके बाद सी दिस ये सारी जगह पे हम लोग गए हैं, इस सारी जगह पे गए हैं मॉरिशस में। तो ये बेसिकली पोर्ट लुइस का सीन है, ठीक है। एंड पोर्ट लुइस में और क्या है, ठीक है, ट्रैवल इन मॉरिशस, ठीक। ये इस जगह तो मैं गई हूँ, दिस इज अ बोटेनिकल गार्डन ऑफ मॉरिशस। एंड दिख रहा है तुम्हें, ये बोटेनिकल गार्डन है मॉरिशस का। इसमें मेरे पास, मैं गई थी, मेरे पास कुछ फोटोज भी हैं, पर उतने अच्छे से मेरे पास नहीं है कुछ। ये एक 7 कलर सैंड बीच का वो है, लाइक यहाँ पे एक होता है 7 कलर सैंड बीच, इसमें मैं नहीं गई हूँ, मैंने ज्यादा घूमा फिरा नहीं है मॉरिशस में। और वाटरफॉल्स मुझे जाना है पर वो नहीं गई हूँ मैं। ये दिख रहा है, ये भी मॉरिशस में ही है। ये कोई मॉरिशस का शिव जी का कुछ मंदिर है, लाइक मंदिर नहीं, स्टैचू टाइप का है। यहाँ पे मंदिर भी है और यहाँ पे महाशिवरात्रि बहुत अच्छे से मनाई जाती है। लाइक महाशिवरात्रि देखने लायक होती है यहाँ की। मैं तुम्हें दिखाती हूँ महाशिवरात्रि का, महाशिवरात्रि मॉरिशस, ठीक है। एक दिन मैं मॉरिशस का लाइव टूर कराऊंगी। ये दिख रहा है तुम्हें महाशिवरात्रि पे, यार यहाँ पे खाना पीना सब मिलता है। ये मॉरिशस का है, दिस इज नॉट इंडिया, दिस इज मॉरिशस। दिख रहा है तुमको, ये मॉरिशन लोग हैं। एंड इनके जो गाने होते हैं ना, वो भी मतलब काफी मतलब अलग टाइप के होते हैं। मतलब जो इंडियन भगवान के लिए ये लोग गा रहे होते हैं, पर अलग टाइप का। पीछे पहाड़ दिख रहे हैं पूरे मॉरिशस के, ये इनका महाशिवरात्रि का होता है फेस्टिवल। कभी मैं पूरा एक डिजिटल टूर कराऊंगी तुम्हें मॉरिशस का, ठीक है, इस पे। तो तब तुम देखना कि क्या सीन है। और यहाँ पे लोग मोस्टली फेसबुक यूज करते हैं, ज्यादातर लोग फेसबुक पे तुम्हें मिलेंगे। तो ये मॉरिशस के बारे में है थोड़ा सा। ये देखो, ये किसी ने डाला हुआ है, ठीक है। तो ये और जगहों में टॉप 10 लोकेशंस में तो ये है। मैं तो कभी गई नहीं हूँ, इतना घूमा नहीं है मैंने, थोड़े थोड़े जगह ही घूमा है, तो वही है।
हाँ, इमली जैसा पूरा। और किसी को कुछ पूछना है? आज तो यार कितना बज रहा है? 10 बज रहा है ना, 11:30 हो रहा होगा इंडिया में तो। So that's it. Now coming back to the normal. Yeah. काफी ज्यादा लैग कर रही है यार वीडियो, समझ नहीं आ रहा है क्यों इतना लैग है। चेक करने दो मेरे को थोड़ा सा। यार यहाँ कोई स्ट्रीमर है तो मेरे को बता सकता है बेसिकली व्हाई इज द वीडियो सो मच लैगिंग एंड मैं इसको कैसे फिक्स करूँ? एनीबडी कैन टेल मी? एनीबडी? एनीबडी हु इज अ स्ट्रीमर knows why is the video lagging and how to fix it? And please subscribe, guys. If you are watching me first time. इनकोडर में देखा तो था मैंने आउटपुट। आई डोंट नो अब कैसा है, फास्ट है, स्लो है, क्या सीन है, कैसी क्वालिटी है? हेलो।
I'm not able to understand how do I. काफी ज्यादा लैग कर रहा है यार, इसलिए मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि कैसे इसको फिक्स करें। कितना देर बैठना है हम लोग को यहाँ पे? 10 हो रहा है। कुछ 9 से स्टार्ट किए थे, अभी तो अप्रोक्सीमेटली आधा एक घंटा और बैठते हैं, उसके बाद एंड करेंगे स्ट्रीम को। सो अभी भी कोई देख रहा है क्या? आई थिंक मैं बहुत गलत टाइम पे स्टार्ट करती हूँ लाइव स्ट्रीम्स, क्योंकि आई स्टार्टेड एट द टाइम ऑफ जब इंडिया में बज रहा होगा 11 11:30, तो उस समय मोस्टली पीपल गो टू स्लीप, सो उस समय समझ नहीं आता किसी को क्या करें। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो हाय गाइस हु आर ऑलरेडी हियर, किसी को मेरे से कुछ पूछना है और तो पूछ सकता है। एंड मेरे को तो समझ नहीं आता है लाइव स्ट्रीम में आके क्या करें। किसी ने कोई मूवीज देखी है अभी रिसेंटली? कोई रिकमेंडेशन है किसी का? आज मेरे को बहुत बोरिंग लग रहा है यार लाइव स्ट्रीम। लेट्स डू समथिंग। Six. दृश्यम 3। ओके, दृश्यम 3 तो शायद हमने देखा हुआ है। हेलो हेलो, सी यू फर्स्ट टाइम। Oh, great. Nice to meet.
let's have a live stream. So we have some junior from our college. Let's have a live stream together someday. Great, Apurva. Great. See you. Why the thumbnail is after MBBS? Actually, we are in the final year. And that's why. So I'm kind of getting bored. That's why I'm kind of getting bored. That's why I'm not talking about it. Some suggestions to your juniors. Yeah, juniors को क्या suggestions दूँ मैं? Somebody is asking on the chat who is from our college itself that give us some suggestions. So what suggestions should I give you guys? Just start reading whatever. See, follow your teacher. That's what I would say. They give you all set of practice questions. Whatever they are telling you, just follow the teachers. Often at times, even when you are taking history, even when you are going to the hospital, there will be a lot of things that few teachers, few doctors follow particularly. So they might have a contradiction amongst themselves. So just follow your doctor, follow your teacher, whatever they say. And when they see that you are obedient, they definitely support you. So just do not make mistake whenever you are in a college about this thing. Always follow your teacher, always follow your professor, always follow your doctor. Okay, they will definitely help you and support you. That's what I want to say to you. And keep reading, guys. Have a supportive infrastructure with you, which is maybe Prepalato, Marrow, PW, whatever you are taking. Have that thing. Take a subscription. You get it anyway from other sources as well. So if you can manage, you just take it. And yeah, just start with it. That's it. That's what I want to say. So that would be a great support alongside, and it's good to build a great base. See, even if at that exam time you are not able to revise everything, study everything, but if you have a good base throughout the year, you will be able to use your common sense. That's what I want to say to my juniors, that you will be able to use your common sense, and that's what they want to see in the viva. That's what exactly they want to see in the theory paper. That's what we got scolded today. They were showing, today they were telling us about how we wrote in the paper. So that's what I want to tell you guys, that please have a great common sense about the subject. That's how you are going, how you are going to build that throughout the year. I'm not saying have a detailed study about everything, but if you have a generalized idea about everything, you will be able to write and answer a lot of stuff. Most of the MCQs will be on that, the using your common sense, but that will work only when you know the outline of the subject. Okay, for that you don't need to have a detailed study about it. You just need to have outlines. So even if you have that, you'll be able to write very well. So that's just what I want to say. Use build a generalized idea about the subject. Follow your teacher. These two things are going to help you a lot, whether it's your MCQ, whether it's your theory paper, whether it's your viva. So that's all that I want to say to you guys. So I think I answered. Yes, it is on what you want. So she's asking that if you get free time to have hobbies. See, it's up to you, yeah. If you want to do a lot of stuff, you do. So that is the thing that I want to say. I want to do all these things. I don't want to just keep studying, just invest myself in only one thing. So it's very important. I want these things. That's why I do.
The video is lagging so much. I'm so sorry for it, yeah. I'll figure out how to fix those things. So, what suggestions should I give you guys? Start doing whatever. See, follow that's what I would say. They give you all sort of practice questions. Whatever they are taking, just follow the list. Oftentimes, when you are taking history and you are going to the hospital, there will be a lot of things that few teachers, few doctors follow particularly. So they might have contradiction amongst themselves. So just follow your doctor, follow your teacher, whatever it says. And when they see that you are updated, they definitely support you. So just do not make mistake whenever you are in the college about this thing. Always follow your teacher, always follow your professor, always follow your doctor. They will definitely help with this more. That's what I want to speak to you. And you guys have a supportive infrastructure with you, which is maybe from that narrow, whatever you are taking, have that thing. Take a subscription, get it anything from other sources as well. So if you can manage, just take it. And yeah, just start with it. That's it. That's what I want to say. So that would be a great support alongside. And it's good to build a great base. See, even if at the exam time you are not able to revise or read study everything, but if you have a good base throughout the year, you will be able to use your common sense. That's what I want to say. When you will be able to use your common sense, and that's what they want to see in the Viva. That's what exactly they want to see in the um, Okay, so we get a comment that I'm an adventurous girl. My cousin is running a travel company where he takes strangers on a trip, like for a trek or a sunrise point, kinda. I want to go with him at least on weekends, but my brother is concerned about my studies. So I think, guys, listen to this. This is 2026, okay? And you cannot stick to only one thing. Absolutely, one thing at a time, but you can have parallel tabs open, right? So don't see, personally, I would not believe if somebody says concerned about studies. What studies? If you are focused at your thing, okay, anyway, you are doing one thing at a time. No matter 10 tabs are open, so go for it. Yeah, if, figure out ways to manage stuff and go for it. Don't waste your time. Okay. So I think, you come first time, you come once, and I don't think anybody is going to come Mauritius again. So find it out ways to manage stuff and go for it. Don't waste your time. I don't know why is my voice. I think, you come first time, you come once, and I don't think anybody is going to come Mauritius again. I don't know why is my voice like reverberating. I don't understand this thing. I don't know why is my voice. Sis, he would even pay me if I become a good to make strangers as friends and keep them feel included and happy. He wouldn't. I don't know why is my voice like reverberating. I don't understand this thing. Okay, talk about this. Talk about this sometime. Sis, he would even pay me if I become a good to make strangers as friends and keep them feel included and happy. We can do that. We, we can explore that someday. Said. Mm. Like a support guide for his team members.
Great. That is very interesting, you know, कि you get paid to to host a community and to make them included. That is very interesting. I would like to know more about it. I would like to see what if there is any opportunity for me, or what is the opportunity around it. But my own brother, he wants me to just study and get nice grades. Oh, that is very boring, guys. I don't support that kind of stuff. That kind of stuff just makes your life more boring. I don't know if that is what I'm able to hear or no, like if it's still reverberating or not. I think I've changed a lot of settings, but still. Any more comments, guys? Any more doubts? That's the nice thing. Okay, I've changed the setting again. I don't know if still it's happening. That's the thing. That's the thing. He's an engineer and he feels that having great CV or CGPA is enough, and always tells me that I could even enjoy my life after doing MBS and after some specializations. See, bro, that is a very outdated thought. Honestly, I don't support it. Okay, it's your life, it's your time. Do as much as you can, but make sure your important things that you have invested, they don't get screwed. Okay, as long as that is happening and if you are able to manage that, do whatever else you want to do. So this is what I want to say.
Okay. Now I turned on. Now I don't know what is the problem with this stuff. Audio capture, mic, auxiliary. Don't know. I think now maybe I should be audible. I don't know why my voice is reverberating. This is happening first time. Last time in the that didn't happen. Audio input. Now I'm audible. Great. I don't understand. Is the video lagging or is am I able to see that? Like I don't know what is the problem with this stuff. Audio capture, mic. Somebody who knows how to use OBS or Prism Lens or Prism. Wait. My voice is reverberating. This is happening first time. Last time that didn't happen. Audio input. Now I'm audible. Great. I don't understand. Is the video lagging or is am I able to see that? Like, okay, guys, tell me what else you want me to come up with. Like, is there any other kind of video? And if you have not subscribed the channel, do subscribe it and tell me like what else you want me to come up with. Somebody who knows how to use OBS or Prism Lens or Prism. Okay, guys, tell me what else you want me to come up with. Like, is there any other kind of video? If you have not subscribed, then do subscribe it. Tell me like what else you want me to come up with. Have you done any research projects, sis? No, 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 no research project. Research project for community medicine I have done, but that too was very jugaad research project. That was not a proper research work. Our professors are literally pushing us to do one for maintaining the college prestige. In combat, are they asking you to do that, or they are asking you to do that in like for yourself? Like you can do it on your own, or they will publish that. So what is the same? Have you done any research for this? No. Research project for community medicine I have done, but that too was very research project. That was not a research. In general, no. No research project. In general, I have not done anything, but there are organizations that can keep conducting stuff like that. So if you want, you can join those organizations and do research project. And yeah, I have not done any research project.
under the university help, they will publish, okay, if you are interested, I'm not in that kind of stuff, so if you are interested, you can do all those things, but I'm not into all those stuff. I think biggest challenge for me, as I see, is how do you sustain yourself now? And yes, learn the skill, learn the craft. If you are studying medicine, then understand how do you shape up your craft much better. How do you, whatever department you are in, whether you are in pediatrics, whether you are in OBG, whether you are in medicine department, whatever you are doing, just learn how you can, shape up the craft, improve the craft, and that's it. I'm not into all those stuff. And I'm half sleepy today. I've come here because that this was a promise that I'll come on Wednesday, I'll come on. It's second year actually tough. Second year actually tough. I think second year it's lengthy. I don't know if they have reduced the duration now. It was supposed to be 1.5 years, but I think maybe probably they have reduced the duration. Okay, so it's not tough. Patho might be a bit, but follow the question banks, whatever is there, and just go through the major things. We do past year without a miss, and definitely you will be able to clear the second year with good marks as well. So yeah, but I would say it's lengthy. I would not say it's tough. I would say it's lengthy than first year. Absolutely, yeah. With first year, you have a lot of support. Okay, because teachers are guiding you with everything. They are giving you important points, what and all you need to know. Okay, and they are very helpful. They are very kind. But in second year onwards, things start getting a bit difficult, where you need to do a lot of stuff on your own, and so yeah, that is the thing. As well as it's lengthy, so there is a lot of stuff to remember in pharma, in patho especially. So many kinds of cancers and stuff are there. So yeah, you have to do. I think patho is a bit of the task. It's lengthy, I would say. Forensic is not such difficult. Okay. What else is there? Forensic micro, again, it's again bit lengthy, but you just have to follow the teacher, follow all what they are doing. And micro, most importantly, when you are reading microbiology, make sure you make a chart, because most of the questions now are going to be on more of the clinical side. Okay, so when you make a chart, in the chart you mention how you are going to diagnose the case. So basically, this is what helped us a lot. What people were doing, a lot of people were doing, that they were reading about an organism, okay, about a bacteria, about a virus, and they were they started on with the symptoms, they started on with the disease, they started on with everything with that. But you need to understand that this is not the approach of the question. You have to read everything as per the approach, like how do you approach the question, how the question presents to you. So the question will present to you either with a classical symptom, either with like a characteristic or unique test, or either with the unique identification of the organism or the pathogen. Okay, so you have to make a chart. That helped me a lot, and we didn't put a lot of time reading micro, and I cleared it in one go. So this is how you need to make that chart, make sure all those things are there with you. That is the diagnostic chart, because all the questions, whether it's a long question, short question, I clearly remember all the questions had this diagnose, give me the test. Okay, what is the test for it? So test is also how you write 5 points. No, how are you going to collect the sample? Then what is all step by step? There are 5 points in that. So you know the test, you know the diagnosis. So the question is half done there itself, and you gain maximum marks in micro from there itself. So remember, making the chart and keeping that you is most important in micro, and the approach of you going or reading
from disease to everything, or from organism to everything, or spending so much, that's not going to work. You have to understand how are you going to diagnose. That's going to solve major part. Diagnose and test. That's it. That is going to solve major part. I'll give you the chart if I have. I don't think I am having right now, but that chart is very important. In that chart, you have to write the like you have to write the things that will be asked you in questions. So that can be what? Any characteristic test is mentioned. Okay, any characteristic feature of the disease is mentioned. Any special sign of the disease is mentioned, and any special sign of the pathogen is mentioned. These things, I don't think the pathogen sign is that important, but sign of the disease is mentioned, or the specific test is mentioned. Okay, these two things you need to write in the first two columns, and then you write the pathogen, and then you write the other things. And this is how you just match the columns. Okay, this is how it's going to be. Okay, I'll just try. See, I'm not the best person to ask this stuff, because honestly, I'm not the most studious from the students right now in the med school. But definitely, I'll try to help you on this, because I didn't study micro a lot, but this is what that helped me to pass clear it in the shortest time. So, and a lot of people got stuck in micro because they were reading from disease side. Okay, so this is some hack that you can definitely, that will definitely help you in a more smarter way when you approach micro at least. So patho was, I think, for me a disaster. So it was a bit of a lengthy subject. So yeah. And that is very great. You are asking me on exactly the med school experience from me, because now I'm in the 5th year. And now it's like I have to see everything as a flashback. You know, people say when you enter second year, that time when it ends, now the remaining 3 years is 1 year of your, what do you say, third year full, fourth year 6 months, and then 5th year 1 year. It's not going to feel that it's a lot of time. So things pass on very quickly after you end your second year. So yes, it's just second year. You just have to cross second year, and then everything speeds up very fast. At least the skeleton of the chart. Definitely, I will definitely 100% give you a skeleton of the chart. You can subscribe to the channel. I'll give you notification. I'll maybe one day come live to explain how I did that. So definitely, if you guys have not subscribed to the channel, guys, please do subscribe. This is not a channel where I'm simply dancing, I'm simply doing nonsense stuff. Okay, or dancing is not nonsense stuff, but I'm saying like I'm not doing, not talking nonsense things here. So it's a value channel. The content is valuable. So when you come on this channel, in any way you are going to only get value. So you can subscribe to the channel and be the part of the community. Okay, live is a place, like live is a time where we come and interact with each other. We sit, it's a window that opens between me as a channel host and you as the audience, and we can exchange a lot of things together at the same point. So this is a very good time where we can actually learn and talk to each other and share our experiences. So we should utilize this time a lot. So definitely I'll give you that, and I would insist that to all the people who want me to suggest anything, please do join the WhatsApp channel. The link is in the bio, and please do join the Telegram channel. The link is in the bio. I'll in some time I'm going to come up with a community on Discord or in any place which is more feasible, and there I'm going to come up with a lot of stuff where I come live and teach you all guys, or just guide you all guys simply what are our tricks to get away with the medical school exams. So whenever you are going to ask a topper, the topper is going to suggest you that read everything, which is not practically possible for a lot of students. So if you want to understand a bit of tricks to how get away with the stuffs, then probably I'm going to bring a lot of people on board that don't just ask you to read everything, but they give you tips, tricks to just get away with a lot of things. That is very, very possible. That's very, very needed when you are often at times you are a last minute doctor. So definitely we are going to cover, but
do subscribe to the channel, guys. It's very important that you hit the subscribe button. So I come here live. I'll ask you to come to join the community, and there we can do it together. Okay, there I can demonstrate you personally when it's just the community. Okay, not a broadcast. So please do subscribe. Please do subscribe the channel. And hit the like button, guys. I don't know why no one has liked this video. So I have exams from 24th. Any last minute suggestions from examiner point of view? Like to survive few questions even if nothing is coming in your mind at all that time. So see, just give me 1 second. Okay, I have exams from 24th and last minute sessions from the examiner point of view, like the to survive few questions. Okay. See, the most important thing is you must attempt the questions first. Okay, please attempt the questions first. Make sure attempting the if you do not know anything, just write what is given. Okay, and use your common sense. Medical school is not that difficult. Even if you're talking about pharma, if you have an outline about the subjects, then I would say you can write something about it, right? Use your common sense is very important. Today we got scolded because we were not using, like, we didn't use our common sense at few points in the paper where we could have easily done, like, where we could have easily done very well. So for example, when you see something, when you can see that it's a bacterial disease, you can at least write antibiotic. Okay, if you have no idea about what specific antibiotic you are going to give in that case, you can at least write that. So these are few things, guys. Please do try to attempt questions. Please make sure you at least write given. You have to do something so that examiner can give you at least half marks if you are not knowing anything about the topic. But I don't think here in Mauritius, in Anna specifically, you are going to fail because they it cannot happen. You have to if you just go through the topics well, if you go through the past years well, you will have some idea. This time in pediatrics, we got a question on Moro's reflex, and a lot of people were not knowing what is Moro's reflex. Okay, and so many people, and we got a question in orthopedics on gait. Okay, so a lot of people didn't have any idea about what that part is. So if you have studied the past years well, a lot of things, past years what happened, that even if the exact question is not coming, okay, but still it will be modified in a different way. Maybe the other thing will be asked. So try to study past year topics instead of studying past year questions. Do study past year questions, do study past year paper, and make sure that you study the topic which is mentioned in the past year question. Okay, for example, like anything. So if you do that, then probably you will be able to attempt a lot of questions. Okay, and I would suggest one thing that worked for me, like a few things that were quite unexpected. I feel I didn't hear about them before in the class or in the studies. So like the question about Moro's reflex. I don't remember where did I see that in the past year. So I was just like scrolling through some reels in you say some educational reels. We subscribe to few channels on Instagram or stuff. So when you have that kind of thing, when you keep seeing all those stuff, there are few things, common things that you might miss
and you can cover on those things. So yeah, I remember Moro's Reflex, some pediatric doctor that comes on the Instagram a lot. So he was once telling about that, and a lot of people, I think, they miss that thing, Moro's Reflex, and I was able to write about it because I saw it in that reel once about that. So yeah, if you have subscribed to a few channels, Instagram channels or Instagram, you say pages or YouTube pages, um, that give you small bites of medical information, then that definitely helps you to cover up a lot of things that are a bit not common, and that you might miss while you are studying. Small things. So, like, it helped for me. So, I want to say, just subscribe to those kind of channels that give you small bits of medicine. And for that itself, I'm giving you something. I made a small post here on my YouTube. Okay, so that was about uh, like, I started a small series called Small Bites of Medicine. So to give like small things of related to medicine in a very interesting way. So it helps me revise the stuff and explain it in a more interesting way, and probably it would be helpful. So if you can just check the post to the people who have not checked, you will be able to understand what that is. So this will give you, like, you can learn small things here. All of us can learn small things in a very interesting way. So you can just check this out, the post that I have given this out. So yeah, that's very interesting. So what do we learn basically? Best way to not miss out some things that are okay. To a lot of people, okay. So I'll just try to recollect that some of the things that goes wrong with us, as you had said, that often at times we don't know how to answer a lot of questions. So what do we need to do? What should we do? Make sure that you have written what is given in the question. Okay, make sure you will be able to use your common sense when you have read the past year papers, when you have, have a generalized idea about the chapters. Do not need to go very detailed first time. Just have an outline about the chapter. Do attend classes, and this really helps you a lot. Okay, your common sense works very fast in the exams. I feel like even if I read a lot of stuff, and 2 days before, 3 days before, I'm not able to recollect anything. Whatever works best for me, because I do attend all classes. Okay, so these kind of stuff stays in your subconscious and helps you write when you are not, when you like few answers that you are completely blank about. So this is very helpful, and make sure that you attend classes. It's very important. And they cover a lot of stuff in the class. I still remember often times when I get blank, I don't know particular for one or two answers how to write, and I have not heard. This helps me a lot, especially in OBG, especially in pediatrics, especially in subjects that are covered very well in the college. So you can do this definitely. It's nearly 2 hours now. We are here. And anybody who has not subscribed to the channel, guys, please do subscribe it. Please subscribe it. We're gonna have great time here. And please do comment and let me know that what kind of videos you want next. Next, what kind of
Okay, I want to make one announcement. I'm going to come here with few people on live that are going to tell you the last minute doctors. That is going to be an episode of last minute doctors that are going to tell you that um when you are in the last minute, how you are going to clear out the paper with the least time. Okay, so that is going to be a very helpful live video for you guys. So please do make sure that you attend the live. So for that you need to subscribe the channel. Okay, I hope that is going to be very helpful for you guys. So I'll try to bring someone that helps you with those things, and we give you all the bits, all everything, because when you ask a topper how you clear exams, they will ask you read everything, read everything, read everything. That is not possible. And there is a category of students that are the last minute doctors, the last minute pass people who pass the exams, people who clear it. Okay, at the last minute. So what are the tips tricks they use? You also need to know those things, because often at times this is a complete package. So if you want the second part, apart from a topper's guide, if you want how you the last minute doctors pass the exam, so if you want that, I'll definitely bring few people here who have done it very well and who can guide you. So yes, that would be a great episode, I think. I think today's live was a bit very lagging, bit very messy, and I'm quite bored because I'm half sleepy and I'm quite blank. I planned it last moment, so I don't even know that how I'm gonna like do. So bit baffled. But I got a lot of ideas about how to do live. Okay, what next topics I should come up with. The last minute doctors. Okay. Neat. Sorry. Guys, please subscribe to the channel. I'm half sleepy. किसी को कुछ और पूछना है? मैंने काफी ज्ञान दे दिया अभी. अगर वो एपिसोड चाहिए तो इस वीडियो पे कमेंट जरूर करना. इफ यू वांट टू सी how few students prepare the last minute so in medical school, then please do comment on the video. Live chat में नहीं, comments में भी comment करके बताना जो normal comments होते हैं कि तुम्हें वो वीडियो चाहिए कि नहीं. I'll bring a lot of people who know how to get away with papers at the last moment, especially in the medical school. So we will have a great episode together. मेरा भी लाइक माइंडसेट ऐसा ही था पहले कि सारा चीज पढ़ो, सब कुछ करो, पर नहीं यार, तुम्हें एक स्मार्ट अप्रोच रखना पड़ेगा. दिस इज हाउ यू गेट अवे विद लॉट ऑफ एग्जाम्स. ओके, यू कैन नॉट हैव लाइक यू कैन नॉट डू एवरीथिंग, सो स्पेशली इन अ मेडिकल स्कूल. Anything else?
सब्सक्राइब इफ यू हैव नॉट डन ऑलरेडी गाइस। कितनी बार मैं बोलूँ ये चीज़। एंड अगर वो वीडियो चाहिए जिसमें हम लास्ट मिनट डॉक्टर्स कैसे एग्जाम पास करते हैं वो बनाए, तो प्लीज कमेंट करना इस पे। एंड दैट वुड डेफिनेटली हेल्प यू एज अ जूनियर। ठीक है, क्या टिप्स ट्रिक्स क्या सारी चीजें हैं, तो आई थिंक वो बहुत। एंड आई डेफिनेटली ब्रिंग समवन ऑन लाइव that can talk on that what is the topper's guide to pass, not pass, basically to top, to do very well in a medical school. So I'll bring people to speak on that topic as well. Hmm. Hmm. Okay, guys. It's quite late and time to go now. So we'll end the live in a couple of minutes. And मेरे को अभी भी नहीं समझ में आ रहा लिटरली मैं सही तरीके से लाइव कैसे करूँ। तो ठीक है, देखते हैं। ओके, अगर कोई और नहीं दिख रहा है तो लाइव को एंड करते हैं फिर। चलो गाइस, हैव अ ग्रेट डे, ग्रेट नाइट, लाइक गुड नाइट एंड टाइम टू गो। बाय। कितना बज रहा होगा? 12 से ऊपर ही हो रहा होगा इंडिया में। तो चलो चलते हैं। ठीक है, सोने, आराम करने। मैं बहुत थक चुकी हूँ यार, मेरा दिमाग आधा काम नहीं कर रहा है, क्या करना चाहिए।